बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हिन वक्त असांखे जिते भी ॾिसी रहिया आहियो सना जे प्लेटफॉर्म तां वुमेन काउंसिल जे प्लेटफॉर्म तां वेदर यू आर इन अमेरिका इन कैनेडा पाकिस्तान में सिंध जे कंहिं बि हिस्से में हिन वक्त आहियो तव्हांखे वुमेन काउंसिल जी तरफ़ खां असां भलीकार चऊं था थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त वुमेन काउंसिल जो इहो सेशन इहो जो सीरीज़ आहे मीट द मेंटोर या बेसिकली असां स्टार्ट कई हुई in order for people to get a first hand knowledge उहे शयूं जो हिन वक्त असांजे हाई डिमांड में आहिनि हुन जे बारे में मालूम करण ऐं not only are these sessions conducted but they are moderated by those who have actually excelled in those areas. Without further ado मां दी एना खे रिक्वेस्ट कंदसि जो कि वुमेन काउंसिल जी मेंबर आहिनि त उहे असांजी अॼु जी जो गेस्ट आहिनि डॉक्टर फौजिया इदरीस खे वेलकम कनि हुननि जो इंट्रोडक्शन कनि एंड देन दी एना खान will be the one to moderate today's session. So Adi Anna, please go ahead. Thank you so much, Iram. As a introduction, Joe. Assalamu alaikum to everyone. Hello to everyone. Jeko dunya je ke bese mein asanke isi rahe ho ahe budhi rahe ho ahe. And today's session is actually very special for me and near and dear to my heart. I'm Iram Kichuke. I love this opportunity to host Fazia. Jeka लफ्ज़ मुझे ख्याल में नंढा अनफाजिया जी इंट्रोडक्शन जलाए शायद घट पे जीवन दा मुन जलाए पर यो ऑनर आहे कि मां फाजिया के इंट्रोड्यूस क्या होस्ट क्या तो अस्सलाम वालेकुम फाजिया good to see you after years. Same here, yeah, I think 25 years. Maybe almost. Let's start with introduction. Fazia, असांजो ग्रुप जो इंट्रोडक्शन भी आहे कि फौजिया मां क्लास फेलो हुआसीं पर फौजिया जो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इहो आहे कि फौजिया एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाय बैकग्राउंड ऐं हुन मास्टर्स कई आहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऐं क्रिप्टोलॉजी में ऐं उन खां पोइ हुन PhD कई ऐं इट्स एन ऑनर दैट उहा पहिरीं ख़ातून आहे पाकिस्तान मां फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी जंहिं साइबर सिक्योरिटी में PhD कई ऐं उन खां पोइ हिन वक़्तु फौजिया जेका आहे सा एज़ अ डायरेक्टर कमु करे फॉर बिज़नेस इंक्यूबेशन कमु करे रही आहे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मां फौजिया जे नाले ते इलाही अवॉर्ड्स आहिनि फौजिया जॾहिं मां अवॉर्ड्स जी लिस्ट ॾिसणु लॻसि त मां सोचां पई कि इहे सभु अवॉर्ड्स मां पढ़ंदसि कीअं पर आई पिक्ड टॉप फ्यू के जेके मां ऑडियंस जे साम्हूं प्रेज़ेंट कंदसि ऐं बाक़ी तव्हांजा सभु अवॉर्ड्स तव्हांजे इंट्रोडक्शन जेको हिन मीटिंग जे लाइ वियो उन में लिखियल आहिनि फौजिया खे यूनाइटेड नेशंस जो अवॉर्ड मिलियो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फौजिया के रोल मॉडल जो अवार्ड भी आहे in cyber security. She is recognized as one of the top women in cyber security. Along with her, all the recognitions, Fazia हिकिड़े CEO आहे Cynosure technology firm जी जेका cyber security जे लाइ भी कमु कंदी आहे ऐं last not last but one additional thing is जेके माण्हू स्टैम्प सां वाक़िफ़ आहिनि इट्स अ ऑर्गेनाइज़ेशन जेका इंटरनेशनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी खे प्रमोट कंदी आहे उन जे वुमेन ब्रांच जी फाउंडर भी ऐं प्रेसिडेंट भी रही चुकी आहे फौजिया लिस्ट इलाही ट्रिकी आहे ऐं मां जस्टिफाई न कंदसि बट आई विल give it to you to introduce yourself a little bit before we start. Thank you so much, Anna. I think, shall I speak in Sindhi? I would like to speak in Sindhi, actually. जी असांजे जो भी ऑडियंस आहिनि उहे सभु बेसिकली सिंधी आहिनि त असां कोशिशि कंदासीं त असां सिंधी में कयूं पर डेफिनेटली वी कैन जस्ट टॉस प्लीज गो अहेड राइट ओके थैंक यू सो मच एना एक्चुअली मुंहिंजे ख्याल में एना मूंखे कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करे छॾियो आई डोंट नीड मोर इंट्रोडक्शन आई थिंक इट वुड बी बोरिंग फॉर यू एंड फॉर मी एज़ वेल त मां पंहिंजो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कराए थी छॾियां I actually started my career in military and defense industry and Pakistan Air Force में मां कम कयम and Pakistan Aeronautical Complex में कयम for around 22 years
And उनखां पोइ I spent some time in academia and automobile company में भी मां कुछ अर्सो like few months कम कियो. इनखां पोइ after 22 years of service in Pakistan Air Force, मां actually mid 2019 में Air Force मां retirement वरिती. ऐं मां पंहिंजो टेक वेंचर स्टार्ट कियो Cynosure Technologies, जेको पाकिस्तान जो फर्स्ट ख़ातून लेड जेको साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वेंचर आहे. ऐं हिन में 80% जेके आहिनि उहे ख़वातीन कमु थियूं कनि. ऐं मेनली जेको असांजो कमु आहे इट्स फॉर मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल सेक्टर. एंड recently actually Dawood University ke join kiya hai as a director business incubation center, and as a director BIC actually मुझे कमा है to support students in their startup journey. And मां हुन सां गॾु पंहिंजो BS cyber security and data sciences and AI में भी programs start किया दाऊद में, and उन्हनि जी मां program director आहियां. ऐं इन सां गॾु मां जेको आहे उहो हिकु NGO स्टार्ट कई वुमेन इन स्टेम, जेके गर्ल्स एंड वुमेन आहिनि स्टेम जे रिलेटेड एजुकेशन एंड कैरियर में उन्हनि खे सपोर्ट करण जे लाइ ऐं उन्हनि खे प्रमोट करण जे लाइ. एंड आई एम रियली पैशनेट त वधि में वधि गर्ल्स एंड ख़वातीन जे लाइ जेको आहे मां कमु कयां, उन्हनि जी नॉलेज एंड स्किल्स एनहेंसमेंट जे लाइ कोई उन्हनि खे प्लेटफॉर्म ॾियूं ताकि हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थियनि ऐं पंहिंजे कंट्री जे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे सघनि. Thank you, Fazia. Fazia, cyber security जी I'm much of इसके lead, one of the lead in Pakistan. But cyber security could do I now the nature vandas पर काफी technical subject आहे. I तहाँ छो choose कियो to specialize in cyber? Like what made you choose cyber security? मूंखां ग़लती थी वई. I think yeah. Actually, I would say मां जॾहिं बल्कि इन खे बि यादि हूंदो मां जॾहिं बैचलर्स कयमि उते मां पंहिंजो प्रोजेक्ट फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट हुयो मोबाइल सेल्युलर सिक्योरिटी ते, and I actually used scrambling technique. हालांकि हुन टाइम ते बिल्कुल even cellular mobile itself was a new technology actually पाकिस्तान में especially. ऐं सिक्योरिटी जो त कॉन्सेप्ट ही न हुयो, बट आई डोंट नो जस्ट आई थॉट कि मां हिनखे सिक्योर कम्युनिकेशन कयां एंड आई यूज्ड स्क्रैम्बलिंग टेक्निक एक्चुअली. एंड हुन ते मूंखे IEEE जो गोल्ड मेडल मिलियो हुयो हुन प्रोजेक्ट ते. हुन प्रोजेक्ट खां पोइ एक्चुअली मुंहिंजो इंट्रस्ट टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी वधी वियो. And after graduation, military joined कई, and military में actually most of my work was related to information security, cyber security. ऐं हुते उन सेटअप में रहंदे उन्हनि मूंखे मास्टर्स लाइ मोकिलियो in information security and cryptology, जेको मां military college of signals NUST मां कयो. ऐं हुते मां डिस्टिंक्शन खई जेके भी मिलिट्री स्टूडेंट्स हुया आर्मी नेवी एंड PF जा उन्हनि मां के टॉप कियो. उनखां पोइ वापसि मां PF में अची उन्हनि जे सिक्योरिटी सेटअप ते कमु कयमि. एंड एक्चुअली असां PF में साइबर सिक्योरिटी जी पूरो सेंटर इस्टेब्लिश कयो फर्स्ट टाइम. So I was lucky त टीम सुठी हुई, they were really good जेके बि मां सां गॾु हुया. उन्हनि सां गॾु मूंखे इलाही सिखण जो मौक़ो मिलियो साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जे बारे में. ऐं उते 3 years खां पोइ कमु करण खां पोइ आई जस्ट थॉट कि मूंखे हाणे PhD बि करणु खपे इन ई फील्ड में. सो आई एक्चुअली वेंट टू UK फॉर माय PhD. एंड आई थिंक हे जेका कंटिन्यूएशन हुई मुंहिंजी एजुकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ जेका मां नॉलेज लर्न कई पंहिंजी एजुकेशन उहा अप्लाई बि कयां पई इन रियल लाइफ एक्चुअली, त हिन सां मुंहिंजो वधीक शौक़ु वधंदो वियो ऐं ग्रो कंदो वियो. So now cyber security is just in my blood actually.
वो त नज़र अचे थो पर अच्छा फ़ाज़िया हिननि जीअं एरम इंट्रोडक्शन में ॿुधायो हिननि सेशंस जो वन ऑफ द रीज़न इहो आहे की असां माण्हुनि खे ॿुधायूं स्पेशली स्टूडेंट्स खे ऐं कि ये डिफरेंट टॉपिक्स छा आहिनि ऐं न सिर्फ़ु फ्रॉम थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव खां त इलाही बुक्स वग़ैरह अवेलेबल आहिनि पर असां ॿुधणु चाहियूं था प्रोफेशनल्स खां कि उहे कीअं हिनखे एक्सप्लेन कंदा त तव्हां थोरो असांखे एक्सप्लेन कंदा कि साइबर सिक्योरिटी आहे छा नालो ॾाढो टेक्निकल आहे ऐं इलाही माण्हू जेके प्रोफेशनल आई टी में आहिनि ऑफकोर्स उहे त सम्झी सघंदा पर असां पंहिंजे ऑडियंस खे ॿुधाइण था चाहियूं कि साइबर सिक्योरिटी आहे कहिड़ी शइ बेसिकली थैंक यू एना एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी आई थिंक मां पंहिंजी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम सिंधी में एक्सप्लेन कंदमि तो शायदि थोरो मुंहिंजे लाइ ॾुखियो हुजे आई डोंट नो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली इट्स तव्हां जेके पंहिंजा सिस्टम्स आहिनि जेके इंटरनेट ते कनेक्टेड आहिनि उन्हनि सिस्टम्स खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ फ्रॉम लाइक जेके बि थ्रेट्स आहिनि साइबर स्पेस जूं दिस इज साइबर सिक्योरिटी ऐं हिन में तव्हां डिफरेंट टेक्नोलॉजीस डिफरेंट कंट्रोल्स तव्हां अप्लाई कंदा आहियो टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स नेटवर्क्स प्रोग्राम्स डेटा एंड डिवाइसिस जेके आहिनि तव्हांजूं उहे फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड हे तव्हांजी हेल्प कंदी आहे त साइबर जेके क्रिमिनल्स आहिनि उन्हनि खे तव्हांजे सिस्टम या डिवाइसिस ते एक्सेस गेन न करण जे लाइ ऐं साइबर सिक्योरिटी जेको आहे जो एम आहे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड exploitation of systems, networks, and technologies. So right now, like with digital technology penetrating into means के तकरीबन हर शे असांजी लाइफ में डिजिटल थी वई आहे and even जेके असांजा घर में ॿार आहिनि they are actually digitized I would say. So जॾहिं एतिरी घणी डिजिटल लाइफ थी वञे त डेटा हैज़ actually become the new oil I would say. And cyber criminals have found a new treasure box that is full of wealth of data. So data is actually a new oil and even governments जेके militaries and national security organizations आहिनि they are actually dependent on computers and networks and उन्हनि जी जेका डिपेंडेंसी आहे इंडिविजुअल्स जी एंड नेशन स्टेट्स जी ऑन इंटरनेट एंड डिवाइसिस उनजे करे कुझु स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जेके आहिनि उहे उन्हनि इंटरवीन कयो एंड दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दी वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ साइबर स्पेस जेका तो फ़ौज़िया तव्हांखे सॉरी हिकिड़ो सेकंड मां पॉज़ कंदसि असां तव्हांजी वीडियो नथा ॾिसी सघूं आर यू शेयरिंग एनी प्रेज़ेंटेशन और समथिंग बिकॉज़ वी कैन नॉट सी एनीथिंग अञा मां कई प्रेज़ेंटेशन नथी शेयर कयां अच्छा तव्हां प्लीज़ पंहिंजो वीडियो ऑन करे छॾियो अथी फ़ौज़िया वीडियो मुंहिंजे ख़्याल में आई थिंक मुंहिंजे एंड ते कुझु सिग्नल जो प्रॉब्लम आहे सो मे बी समटाइम्स मुंहिंजी वीडियो जेका आहे उहा Yeah, that's perfect. We can see you now. राइट ओके तव्हां मुंहिंजी वीडियो जे बग़ैर ई मूंखे जेको आई थिंक जस्ट लिसन टू मी So sometimes actually मुझे ख्याल में मार्ट सिग्नल जो प्रॉब्लम आहे सो मे बी अगर इट गायब थी थे Yeah, sorry to interrupt. Sorry, let's continue, फ़ौज़िया. So cyberspace जेका है it's like now has become a fifth domain of warfare. ऐं हाणे जेके बि militaries आहिनि different countries जो they don't have to actually cross the border. पंहिंजे मुल्क में रहंदे करे they can actually capture your assets. So cyberspace इन करे means कि important थी वई आहे ऐं
वो चवंदा न डेटा इज़ तव्हां जे हाणे चयो डेटा इज़ अ न्यू ऑयल और डेटा इज़ अ करेंसी त हाणे इन करेंसी खे असांखे प्रोटेक्ट करणो पवंदो आहे इलाही क्लोज़ली. बिल्कुल मुझे सिग्नल्स मेरे ख्याल में I have lost my signals. I don't know. असां तव्हांखे ॾिसी ॿुधी सघूं था फौज़िया. Right, ठीक है. So actually, cyber security, I would continue the 2013 में actually एक new revelation आई जेके developed countries हैं उन्हनि कहिड़े नमूने उन cyber space खे exploit करे and developing countries they different spying and data collection, data manipulation, we kede namune ho kan pya. They were already actually using cyberspace as a tool to get power over other countries and other nations. 2013 में actually यो reveal थियो त जेको USA जो NSA आहे, they were actually monitoring all the main servers of Google, Facebook, Yahoo, Hotmail, Skype, Microsoft. They were already like doing all this surveillance and data capturing. So hence means कि cyber security the importance the ketri important are for nations for individuals when they are actually using it for everything in their daily life. Thank you, Fazia. Fazia, example in the everyday example जेको असां cyber security threat face कंदा हूं आम माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जी better understanding जे लाइ. जितां गूगल जी मिसाल ॾिनी गूगल ते असां जेको डेटा सर्च कयूं था वो मॉनिटर थिए थो. Anna, can you repeat? I can't hear you. न मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे की असां ऑडियंस खे साइबर सिक्योरिटी जो इंट्रोडक्शन ॾियूं था त का एवरीडे एग्जाम्पल तव्हां शेयर करणु चाहींदव उनजी अंडरस्टैंडिंग जे लाइ साइबर सिक्योरिटी जी की जेको आम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट असां सभिनी खे हर वक़्तु रहंदो आहे. Yeah, sure. Actually, मां बिल्कुलु हिकिड़ो कॉमन जेको आहे बल्कि असांजे घरनि में स्पेशली जेके ॿार आहिनि मोस्टली पेरेंट्स जा मोबाइल फ़ोन्स जेके आहिनि उहे ॿारनि जे हथ में आहिनि and we don't know त हो छा पिया यूज़ कनि कहिड़ियूं एप्स था डाउनलोड कनि mostly they are actually downloading applications from third parties. ऐं जेके third party applications आहिनि they ask for so many permissions. Like they can actually access your cameras, they can access your microphones, they can access your speakers. It means जेका मोबाइल डिवाइस आहे ॿारनि जे हथ में या तव्हांजे हथ में अगरि तव्हांखे अवेयरनेस न आहे ऐं तव्हां काई बि ऐप उनखे काई बि परमिशन था ॾियो it means you are under monitoring, you are under surveillance for 24 hours. So any means कि हुन ऐप because mostly जेके apps आहिनि इन क़िस्म जूं third party stores ते they are like surveillance or spying. उन्हनि खे तव्हां जॾहिं परमिशन था ॾियो त तव्हांजी कैमरा जे थ्रू you don't know त केरु तव्हांखे वॉच थो करे but they are actually watching you, they are actually listening to your conversation. तव्हां घर में छा था ॻाल्हायो, तव्हां घर में छा था कयो, you are actually under observation all the time. So this is really means कि सभ खां मां हिकिड़ो नंढो एग्जाम्पल ॾिनो त कहिड़े नमूने तव्हांजे ॿारनि जे थ्रू you are under surveillance and कोई बि तव्हांखे ॾिसी थो सघे, कोई बि तव्हांजी सिक्योरिटी खे ब्रीच थो करे सघे ऐं तव्हांजो जेको इम्पोर्टेंट डेटा तव्हांजी हुन डिवाइस ते आहे उहो स्टील करे थो सघे and they can exploit that data to steal your financial actually details, to steal your contacts, to steal your private data. तव्हांजे मोबाइल मां तव्हांजियूं photos जेके आहिनि they can steal those and they can blackmail you. This is just a very common example. So awareness is really must, especially जेके असांजे घर में ख़वातीन आहिनि जेके असांजा ॿार आहिनि उन्हनि खे they should be cyber educated. उन्हनि खे एतिरो awareness हुअणु खपे त this device can
take anything from them actually. So it's not that like a device achi hui hai, so now they can use it for anything. Device achi hui hai, digital bhi tanji internet is full of data, I know, full of wealth of data, but it's really ke koi risk hai. It's not for free actually. It's not for free. Yeah. Data is not for free. You are getting so much information. You are getting so much good things, but it's not for free. बस यो ता याद रखो. There is a cost. Absolutely. कल बल्कि मां पंहिंजी हिकु फ्रेंड खे टेक्स्ट कयो व्हाट्सएप ते कि मां हे कोर्स करणु चाहियां थी न इहो मुंहिंजे लाइ अर्से खां विश लिस्ट में आहे एंड गेस व्हाट अधु कलाक खां पोइ न मां वटि हिकिड़ी रैंडम फ़ोन कॉल आई नंबर काफ़ी लिचट पियो लॻे सो मां कॉल पिक कई हिकिड़ी मार्केटिंग कंपनी उन्हनि मूंखां पुछियो कि तव्हां इहो कोर्स करण में इंट्रस्टेड आहियो जेको मां पंहिंजी फ्रेंड खे टेक्स्ट कयो हो त ऑफकोर्स व्हाट्सएप डेटा जेको आहे उहो ॿाहिरि शेयर थो थिए ॿाहिरि विकामजे थो त नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि पर वेरी गुड एग्ज़ाम्पल्स फॉज़िया थैंक यू सो मच सो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे फॉज़िया वुमेन इन टेक्नोलॉजी ओवरऑल मां पाकिस्तानी असांजी सिंधी प्लेटफॉर्म सां थी ॻाल्हायां तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं महरान यूनिवर्सिटी में हूंदा हुआसीं त केतिरियूं थोरियूं सी छोकिरियूं हूंदा हुआसीं जॾहिं असां स्टार्ट कयो अञा बि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऐं कंप्यूटर साइंस में काफ़ी हुयूं माना ट्रेंड शुरू थी वियो हो असांखे हिकु ॿ बैच पहिरियां मुंहिंजे ख़्याल में पर उन खां पोइ त ऑफकोर्स ट्रेंड इलाही वधी वियो आहे पर बीइंग अ वुमेन इन टेक्नोलॉजी ऐं उन खां पोइ वरी फर्दर नैरो डाउन करणु साइबर सिक्योरिटी त तव्हां छा ॿुधाईंदव कि असांजी औरतुनि जे लाइ साइबर सिक्योरिटी में कहिड़ो स्कोप आहे माना उन्हनि खे छा करणु खपे छा अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि ऐं हाउ टू टेक इट फ्रॉम देयर तव्हांखे कीअं पंहिंजी एक्सपीरियंस जी बेस ते ॿुधाईंदव Yeah, sure. And actually, cyber security, मां चवंदमि especially girls जे लाइ, women जे लाइ इन करे full of opportunities आहे छो त mostly जेके या research आहे त जेके ख़वातीन आहिनि उहे 3 times more जेके cyber harassment जो शिकार थियनि जॾहिं हो social media थियूं यूज़ कनि या they are using any digital media 3 times as compared to boys they are more harassed so they should learn I would say न सिर्फ़ पाण खे सिक्योर करण जे लाइ पंहिंजी फैमिली खे पंहिंजनि ॿारनि खे उन्हनि खे इहा अवेयरनेस हुअणु खपे so cyber security is must for women number 1 and number 2 it's full of opportunities cyber security is an emerging market and it's really driving the global innovation so it really presents a huge range of opportunities for everyone and agar khawateen in a career ke na opt kyo they will be left out because next jeko time ache to wo cyber security jo jane har shay tanji digital and computerized thi vane so IT is nothing but it's like cyber everything with IT is cyber security so security खां बगैर कोई computer application and हो it's not going to work actually ऐं हिन वक़्तु जेको आहे 50% दुनिया जी जेका पॉपुलेशन आहे उहा ऑलरेडी ऑनलाइन आहे ऐं बाय नेक्स्ट फ्यू इयर्स 90% जेका दुनिया जी पॉपुलेशन आहे इट विल बी ऑनलाइन इट मीन्स के असांजी एतिरी वधीक डिपेंडेंसी थी वेंदी ऑन डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल डिवाइसिस सो वधि में वधि जेके जॉब्स हूंदियूं उहे रिलेटेड हूंदियूं साइबर सिक्योरिटी जे बिकॉज जॾहिं तव्हां 90% तव्हांजी पॉपुलेशन दुनिया जी हिन ते ऑनलाइन थी वेंदी इट मीन्स त साइबर जेके क्रिमिनल आहिनि उहे बि एक्टिव थी वेंदा ऑब्वियसली मीन्स के जेके चोर आहिनि उन्हनि खे वञी बैंक्स एंड हुते फिज़िकली वञी चोरी न करणी पवंदी बिकॉज 90% इज़ ऑलरेडी ऑनलाइन त हुननि खे बसि ऑनलाइन तव्हां दे कैन स्टील योर फाइनेंशियल डेटा एंड एवरीथिंग त साइबर क्राइम बि ओतिरो ई तव्हांजो वधंदो ऐं जॾहिं साइबर क्राइम वधंदो इट मीन्स साइबर सिक्योरिटी जी डिमांड हिन वक़्तु आहे ऐं ईंदड़ टाइम में वधंदी आई वुड से ख़वातीन खे हाणे खां ई इन तरफ़ अचणु खपे बिकॉज हिन वक़्तु पूरी दुनिया में जस्ट 20% जेके आहिनि उहे साइबर सिक्योरिटी में ख़वातीन आहिनि 2013 ताईं इट वॉज लाइक जस्ट 11% बट हाणे हिन साल में वञी
this figure has actually increased to 20%. 20% is actually ilahi ghatta, it's really low. So I would say khawaateen je lai ilahi ghani opportunities ahain in a side te cyber security te it's a growing market, so they should actually consider opting for this career. Thank you, Fawzia. Fawzia, jate opportunities hundiyan utte challenges bhi hundan, right? तहाँ पंची पर्सनल लाइफ में केड़ा challenges observe किया या मे भी तहाँ observe personally न किया पर तहाँ ॾिसो था कि अगर कोई छोकरियों असां जो हिन फील्ड में अचण चाहिन थियूं त केड़ा कॉमन प्रॉब्लम्स आहिनि जेके तव्हां और challenges आहिनि जेके तव्हां ॾिसी रहिया आहियो? Actually cyber security and मां चवंदमि कोई बि जेको बि टेक्निकल फील्ड आहे स्टेम जे रिलेटेड जेको बि आहे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स उनमें ओवरऑल ख़वातीन जी उही घटि नंबर आहे. सो एनी टेक्निकल फील्ड उनमें जेके प्रॉब्लम ख़वातीन के हिन वक़्तु पेश अचनि था उही सेम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम साइबर सिक्योरिटी में बि अचनि था. साइबर सिक्योरिटी में ऑब्वियसली इलाही घटि आहिनि ख़वातीन. It's still male dominated field. The gender biases आहिनि ऐं मीन्स कि असांजे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में त न हुअण जे बराबरि आहिनि. मूंखे हिते पाकिस्तान में का बि न नज़र आई. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समवन एल्स कि जंहिंजो साइबर सिक्योरिटी में कुझु हुजे, बट स्टिल आई एम जस्ट ऑन यू नो ॿाहिरि जे मुल्क में आहिनि बट स्टिल यू नो हुते बि we same problems ahin. They are less in numbers and they are facing same gender biases and in a किस्म जा problems. वही challenge हैं जेके बाकी भी technical fields में ख़वातीन के अचन था. हाँ, मुझे ख़्याल में वही हालांकि जाते थोड़ी वधीक टेक्निकल शइ थी वञे थी. I don't know if it's a psychological or something, पर थोड़ी असांजी छोकिरियूं जेके हूंदियूं आहिनि थोड़ी hesitant हूंदियूं आहिनि. पर जीअं फौज़िया ॿुधायो कि एतिरियूं opportunities आहिनि ऐं IT ऐं साइबर सिक्योरिटी हाणे मुख़्तलिफ़ कोन्हे. ऐं तव्हां पाकिस्तान जी ॻाल्हि था कयो. मां रिसेंटली हिते कैनेडा में हिकिड़ो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट कयो साइबर सिक्योरिटी सां रिलेटेड. ऐं हिकिड़ी यूनिवर्सिटी खां कुझु इंटर्न्स घुरिया ऐं मां वटि जेतिरियूं एप्लीकेशन्स आयूं एक्चुअली सभु male applications, not a single woman on a list to expose herself onto this new technology. पर ॾाढो सुठो लॻो फौज़िया. असांजे ऑडियंस खे इलाही सारा क्वेश्चन्स आहिनि जेके तव्हां ई सिर्फ़ु उन्हनि जो जवाबु ॾेई सघो था. Right, okay. Let's start with some Q&A. पहिरों सवाल आहे, मैम, how to learn cyber security? What are the certifications available in market? All right. अच्छा, certifications अगर मां पुछंदो, I have done no certification. ठीक आहे. मुंहिंजी जेका बैचलर्स आहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोलॉजी एंड कोई PhD साइबर सिक्योरिटी में कयमि, पर मां काई सर्टिफिकेशन न आहे कई. सर्टिफिकेशन यस, अगर तव्हां वटि qualifications न आहिनि and you want to join the field, you can come through internships कयो उन्हनि organizations में जेके cyber security based आहिनि कम था कनि. ऐं सर्टिफिकेशन सभ खां बहितर आहे CISSP कयो, Certified Information System Security Professional. Yeah, it's really on demand. इहा तव्हां करे काफ़ी organizations में even जेका US Air Force आहे उन्हनि में जेके बि security जा आहिनि, it's must for them. So CISSP is a good certification. Start I would say उन सां कयो, पोइ it depends तव्हां कहिड़ी cyber security जी branch खे था पकड़ण चाहियो, because cyber security is not just one field. मां चवंदमि it's like engineering or medical science. या medical में different branches in like orthopedic, eye, nose and whatever gynecology, different fields in. It's not just one medical science. So similarly cyber security जो भी ढेर सारियूं branches थियूं निकिरनि ऐं it's your interest तव्हां कहिड़ी branch खे था पकड़ो. For example, application security is a different field, network security is a different field, cloud security, AI security. So it depends तव्हांखे
कहिड़ी शइ जेका आहे या ऑडिटिंग साइट ते था वञो, ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस साइट ते था वञो, मैनेजमेंट साइट ते था वञो, उन हर कंहिं ब्रांच जी डिफरेंट सर्टिफिकेशन आहे. CISSP is actually, I would say, इनमें काफ़ी शयूं कवर्ड आहिनि. So it's a good start. इन खां पोइ तव्हांखे अगरि हैकिंग साइट ते वञिणो आहे, तव्हां एथिकल हैकिंग जा सर्टिफिकेशन्स कयो, क्लाउड सिक्योरिटी जी साइट ते वञिणो आहे, क्लाउड सिक्योरिटी जो तव्हां सर्टिफिकेशन्स कयो. आई कैन शेयर, मीन्स के तव्हां सां करे थी सघां, तव्हां जेको बि सना जी वेबसाइट हुजे उन ते पोइ रखी सघो था, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, डिफरेंट जेके बि So ब्रांचेस जे रिलेटेड. Surely, basically, we will get in touch with Dr. Fawzia ऐं असां सभु details उन्हनि खां वठी ऐं जो Facebook जो असांजो हिन वक़्तु लाइव आहे हुन में असां उनखे तव्हां सां शेयर करे सघूं था. Please, Adhiana, continue. न मां recap थी पई करणु चाहियां कि let's say असांजा students जेके आहिनि जेके just completed the school bachelor's कई आहे computer science में या कंहिं बि ॿिए subject में ऐं relate कंहिं बि ॿिए न बल्कि कंहिं बि ॿिए रिलेटेड सब्जेक्ट में ऐं स्टार्ट करणु चाहिनि था कैरियर त सर्टिफिकेशन्स जो बि हिकिड़ो ऑप्शन फौजिया ॿुधायो आहे कि उहे सर्टिफिकेशन्स खां बि स्टार्ट करे सघनि था. ऐं ॿियो सुठो ऑप्शन आहे इंटर्नशिप्स जो. इंटर्नशिप्स जो थोरो प्रॉब्लम इहो रहंदो आहे कि उहे थोरो कुझु ॾिसणु चाहींदा आहिनि न कि कुझु रिलेटेड एक्सपीरियंस आहे या न आहे. त फौजिया जो आइडिया कि हिन पंहिंजी बैचलर्स में ही प्रोजेक्ट पिक कयो हुयो जेको सिक्योरिटी रिलेटेड हो. इहो बि ॾाढो सुठो ऑप्शन आहे. जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे अहिड़े क़िस्म जा प्रोजेक्ट्स पिक कनि वाइल दे आर डूइंग अंडर ग्रेड ऐं पोइ इंटर्नशिप्स कनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पोइ इहो एक्सपीरियंस ई हूंदो आहे जेको असांखे पॉइंट ए खां पॉइंट बी ऐं सॼो पर्सनल एक्सपीरियंस ही वठी वेंदो आहे. Adhiana, while you are taking the questions from the Zoom audience, कुछ questions Facebook पे भी आया है, if you allow me. अच्छा, हाँ, sure, go Adi ahead. Fawzia, Faisal Sheikh is asking, if a finance professional is looking forward to enhance his knowledge on cybersecurity, what sort of courses would you suggest? So would you suggest the same courses that you just mentioned? It really depends. तो जेके फाइनेंस वारा आहिनि उन्हनि जी क्वालिफिकेशन प्योरली अगर सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड आहे त मीन्स के उनके पोइ CISSP बट हे सब करण जे लाइ because if he or she doesn't have computer or computing background, I don't know, हो हे सब छो त CISSP या जेके सिक्योरिटी जो आहिनि सर्टिफिकेशन्स उन्हनि में कुछ न कुछ तव्हांजो IT एंड कंप्यूटर ते वञी साइबर ते वञी एना वुड रियली एग्री विथ मी कुछ न कुछ जुड़े थो. ठीकु आहे. सो इट डिपेंड्स छा उन्हनि जी जेका क्वालिफिकेशन आहे अगरि प्योरली सिर्फ़ हिन फाइनेंस साइड ते आहे थोरो घणो बैकग्राउंड वठिणो पवंदो कंप्यूटिंग जो ऐं हुनजो नॉट मीन्स के इलाही घणो बट एंड आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन. साइबर सिक्योरिटी आई वुड से इज़ फॉर एवरीवन. ठीकु आहे. त फाइनेंस वारनि जे लाइ CISSP अगेन आई वुड से CISSP जे थ्रू उहो एंटर थी था सघनि. उनखां पोइ डिफरेंट जेके आहिनि कहिड़े सिस्टम ते था कमु कनि उन सिस्टम जे रिलेटेड उन्हनि खे पंहिंजूं करणियूं पवंदियूं बैंकिंग साइट जी. Just one more question and then I will ask Adhiana. Adi Salma Bhatti, who is also a member of our Women Council, is asking, what other threats are common other than the financial and the military ones? Sorry, can you repeat? What other threats are common other than the financial and military? Financial bhi and military ta asaंखे ख़बर आहे. Is there any other threat which is common? Yeah, sure. Actually मां ॿुधायमि त लाइक सभ खां वॾो जेको थ्रेट आहे इट्स योर प्राइवेसी. मीन्स कि तव्हांजी प्राइवेसी जेका आहे प्राइवेट डेटा दे कैन स्टील एंड यू कैन इमेजिन अगरि तव्हांजी जेके प्राइवेट फोटोज़ आहिनि तव्हांजी जेका प्राइवेट लाइफ आहे उहा अगरि डेटा ॿियो कंहिं थर्ड पार्टी या कंहिं माण्हू इररिलेवेंट माण्हू जे हथ में अची वञे हाउ बिग इज़ द थ्रेट. मीन्स के तव्हांजो पूरे घर जी जेका डेटा आहे इंफॉर्मेशन आहे उहा अगरि पब्लिक थी वञे ॿियनि माण्हुनि जे हथ में थी अची वञे त फॉर इंडिविजुअल आई वुड से इट्स अ बिगेस्ट थ्रेट. ऐं शायदि
फाइनेंशियल थ्रेट हर कंहिं लाइ जेके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग नथा यूज़ कनि उहा शायदि उन्हनि जे लाइ एतिरो वधीक पॉइंट ऑफ कंसर्न न आहे पर प्राइवेट डेटा लीक थियणु ऐं उनखे पोइ कोई ब्लैकमेल करे सोशल मीडिया ते दैट्स अ बिगेस्ट थ्रेट स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन आई वुड से एंड इन खां अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट जेका आहे त तव्हांजी आईडी जेका आहे उहो ॿियो कोई यूज़ करे ऐं तव्हांखे जेको आहे इम्पर्सनेट करे तव्हां लाइक तव्हांजो इम्पर्सनेट करे ऐं हो डिफरेंट सोशल मीडिया ते पोस्ट ठाहे they are harassing or doing some criminal activity so इन क़िस्म जा डिफरेंट थ्रेट्स थी था सघनि मिलिट्री एंड हो त इट्स रियली मीन्स के स्टेट बेस्ड था थी वञनि Okay, Diana, over to you. हिकिड़ो क्वेश्चन मां पुछंदसि असां ऑडियंस जा क्वेश्चन हालांकि मां काफ़ी पुछी चुकी आहियां पर हाणे हिकिड़ो पंहिंजी पर्सनल क्यूरियोसिटी जे लाइ पुछंदसि एतिरा साल कमु कयो आहे फ़ौज़िया हिन फील्ड में को अहिड़ो एक्सपीरियंस को अहिड़ो एक्सपोजर के जेको तव्हांखे रिकॉल अची वियो हुजे के वॉट इफ इट वुड हैव बीन अ सक्सेस के quite a remarkable kind of experience army में रहा है through so एडी international companies से काम किया हुआ of course लाइसेंस confidential हूंदी हो पर एडी एडो को experience जेको तव्हां publicly share करे सघो related to cyber security or हाँ related to your cyber security job that you felt के शुक्र हुयो कि मां हिन पोजीशन में हुयसि त मां हिन खे प्रिवेंट करे वरितो Yeah, कोई भी अहिड़ो experience के जेको when you look back and you say okay this was one of the experience I would remember as a professional experience. Actually, जीअं मां ॿुधायो cyber security मां I was really lucky and fortunate कि मां उन Air Force जी टीम जी member हुयमि जंहिं असां मिली करे cyber security setup establish कयो PF में start कयोसीं त काफ़ी इन क़िस्म जा एग्जाम्पल्स आहिनि पर आई डोंट नो आई डोंट शायदि मां शेयर न करे सघां हाँ डेफिनेटली छो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आहे बट तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां हीअं लॻे थो यू रियली एंजॉयड योर प्रोफेशन थॉरोली इनसाइड आउट या आई डिड एक्चुअली एंड इन जो क्रेडिट मां मुंहिंजी टीम ते बि विझंदसि त मां रियली मूंखे टीम इलाही सुठी मिली and mostly जेके मां सां गॾु हुया they were also mostly PhDs शायदि उन्हनि खे ॾिसी मूंखे शौक़ु थियो त मां बि PhD कयां and मां काफ़ी उन्हनि खां सिखियो and they were really supportive. Awesome. एरम Facebook में आहिनि questions जो chat में मेरे ख़्याल में limited participants आहिनि Facebook ते फ़िलहाल कोन्हनि असां पंहिंजे participants खे चवंदासीं if anyone wants to ask a question directly please raise your hand and I will unmute you and then you can also ask Adi Fawzia any questions related to cybersecurity. अदी फौजिया जेस ताईं माण्हू हैंड रेस कनि तव्हां छा असांजी जो बि स्पेशली असांजी जो छोकिरियूं आहिनि सिंध में उन्हनि लाइ तव्हांजो छा मैसेज हूंदो व्हाट वुड यू give them like again you are a role model and let's be very clear about it and manu penje role models ke and people have you are an influencer basically उहे छोकिरियूं हिन वक़्तु जो हैदराबाद में आहिनि जो हाला में आहिनि जो खैरपुर में आहिनि what would be your advice to them or what would be your message to them to an inspirational one? Yeah, thank you, Iram. Actually, मां तव्हांखे ॿुधायां I belong to very remote part of Sindh actually. सजावल जेको हिकिड़ो टाउन आहे in district ठट्टा ऐं जॾहिं मां हुते पढ़ंदी हुयसि त रियली समटाइम्स छा मोस्ट ऑफ द टाइम असांजे स्कूल में टीचर्स न हूंदियूं आहिनि मीन्स की मुंहिंजे स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस एंड मैथमेटिक्स जी टीचर न हूंदी हुई बट आई रियली वॉन्टेड की मां पढ़ां ऐं पढ़ण जो शौक़ु हुयो मूंखे मुंहिंजो सिर्फ़ु हुननि खे इहो मैसेज आहे त प्लीज़
जेको बि तव्हांजी एनर्जी आहे, जेको टाइम आहे, जॾहिं तव्हांजी पढ़ण जी एज आहे, प्लीज़ पूरो ध्यानु पढ़ाई ते ॾियो। एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। मां हर वक़्तु जेको आहे न, मां रियली मां जेको बि लाइफ में गेन कयो, सक्सेस गेन कई, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। त मां हमेशह प्रायोरिटी ॾिनी। एंड आई वुड रियली लाइक द सिंधियूं जेके छोकिरियूं आहिनि, जस्ट लीव एवरीथिंग। हे तव्हांजी एज आहे पढ़ण जी, वधि में वधि तव्हां पाण खे एजुकेशन जी तरफ़ आणो। एजुकेशन इज़ रियली अ वेपन ऑफ चेंज, आई वुड से। अगरि तव्हांखे सिंध खे चेंज करिणो आहे, अगरि तव्हांखे सिंध में बहितरी आणणी आहे, एजुकेशन खां बग़ैर जेसिताईं तव्हांजी पूरी स्पेशली जेके आहिनि ख़वातीन आहिनि, छोकिरियूं आहिनि, जेसिताईं उहे नथियूं एजुकेट थियनि, यू कांट ब्रिंग एनी चेंज। मां हिकिड़ी शइ ऐड कंदसि फौज़िया जे लाइ। एरम चए था जो शी इज़ डेफिनेटली अ रोल मॉडल। मूंखे पंहिंजी यूनिवर्सिटी जो टाइम थो नज़र अचे, हिन जे हथ में हर वक़्तु किताब हूंदा, चाहे हीअ लाइब्रेरी में वेठी हुजे, गर्ल्स कॉमन रूम में वेठी हुजे, क्लास में। शी वॉज सच अ कीनर। सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक education complemented by hard work. She worked very hard. थैंक यू एना। अगरि यादि आहे वाकई मूंखे लाइब्रेरी में वेहणु एक्चुअली सुठो लॻंदो हुयो। ऐं हुन वक़्तु एक्चुअली इंटरनेट बि न हुयो, मूंखे तॾहिं बि आदत हुई। मूंखे हिकिड़े बुक तां एक्चुअली ॻाल्हि सम्झ में ई न ईंदी। इट्स समथिंग हियर and I can't go, actually I can't move forward जेसिताईं मूंखे हिकु उहा शइ सम्झ में न अचे। So I used to refer so many books जेसिताईं उहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न ईंदी हुई, तेसिताईं मां हुन ते बसि I was locked. So इन करे शायदि मां हर वक़्तु लाइब्रेरी में बुक्स and I was looking for books, त हे शइ जेका लिखियलु आहे, why it's like this. So I would say कि do really question yourself। जेका शइ पढ़ो था उनखे क्वेश्चन ज़रूरु कयो ऐं उनखे ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। त हे शइ जेका लिखियलु आहे, ऑब्ज़र्व एंड क्वेश्चन एंड ट्राई टू क्लैरिफाई त हे शइ ईअं छो आहे। हुन सां इहो जो तव्हांखे हर शइ काफ़ी ट्रांसपेरेंट थी वञे ऐं तव्हांजो शौक़ु एक्चुअली वधे थो हुन फील्ड में। जेसिताईं शयूं तव्हांखे क्लियर नथियूं थियनि, तेसिताईं तव्हांखे फील थींदो इट्स जस्ट अ बर्डन, जस्ट तव्हांखे बसि टाइम पास करिणो आहे। सो मेक श्योर तव्हांखे हर शइ क्लियर हुअणु खपे। अदी फौजिया, मां तव्हांखे हिकिड़ो क्वेश्चन कंदसि। अगरि के फॉर एग्ज़ाम्पल असांजी हिकिड़ी छोकिरी आहे, न्याणी आहे, ख़ैरपुर में आहे, दादू में आहे, उनखे इंट्रस्ट आहे। लेट्स से शी डिड दिस कोर्स जो तव्हां जो बि सर्टिफिकेशन हुई, हाणे उन सर्टिफिकेशन करे छॾी आहे। What is next? Like I don't know anything about cybersecurity, right? I'm a physician. त मूंखे इहो ॿुधायो त अगरि मुंहिंजी भेण सुभाणे सर्टिफिकेशन करे थी पई ऐं हू पाकिस्तान में आहे, त हाणे where does she go from there? कहिड़ा ऑप्शंस आहिनि हुन वटि? मतलब how would she go about working in the real field? Right. Again, सिर्फ सर्टिफिकेशन करे I can't just मां उनखे ख़्वाब नथी ॾेखारणु चाहियां त तूं ओके CISSP करे वठंदीअ या CEH जेको आहे एथिकल हैकिंग करे वठंदीअ त यू विल गेट गुड जॉब। नो, अगेन इट डिपेंड्स त हुनजो बैकग्राउंड छा आहे, केतिरी पढ़ियल लिखियल आहे, छा कयो अथई, मीन्स के छा हुनजो एक्सपीरियंस आहे, न बि आहे। अगरि न आहे एक्सपीरियंस ऐं जेका हुनजी क्वालिफिकेशन आहे इट्स बिट रिलेटेड, त हो हुन साइट खे वठी जॉब नथी मिले, आई वुड से जस्ट स्टार्ट सम इंटर्नशिप in some cyber security related firm. Cyber security related firm doesn't mean त हुनजो 100% कम जेको आहे cyber related हुजे। Any organization जंहिंमें थोरो बि कम security side जो थिए थो, हुनखे just is intern join करे ऐं उनखां पोइ just keep looking for jobs and मां jobs ते I don't now rely on jobs actually। अगरि तव्हां वटि skill sets आहिनि, if you are really capable and you have belief in yourself, then you don't need jobs, I would say. You can create jobs and hamesha your mindset rakho, you should be the creator of jobs, not the job seekers. तव्हां पंहिंजे हिन स्किल्स ऐं पंहिंजी नॉलेज सां तव्हां एक्चुअली पंहिंजो डिफरेंट स्टार्टअप्स लॉन्च करे था सघो। सिक्योरिटी साइड ते नंढी नंढी शयुनि खां स्टार्ट कयो। यू जस्ट डोंट थिंक कि तव्हां हिकदमि रॉकेट ठाहे ऐं लॉन्च कंदो। नो, you just start with very little things
कोई भी blockchain जो कोई नंढो project पकड़े वठो, there are so many things. Start ही means के नंढी शइ खां start करणो पवंदो. ऐं हिन वक़्तु मां really I would like के सिंध में जेके आहिनि young generation, they should really think about entrepreneurship, about startups. ऐं हे जेका unemployment ऐं जेका job ॻोल्हण सिंध में overall Pakistan में it's really difficult. I know agar you don't have links, you don't have references, it's very difficult. So don't look for jobs. I would say just create jobs. Thank you, Adi. Iram, एक question है Dr. Arfa जी Well, तरफ़ां. I will. That's what I wanted to say. But before that, Dr. Arfa के साथ say कि वो unmute कन. पर हुन खां पहिरों Dr. अदी फौजिया अगर तहां हुनन छोकरन खे जो तहां चओ था त तहां कंहिं भी कंपनी में कयो, can you give some examples of those companies in Pakistan that are operating in Pakistan that they could go जो हुनन वटि वञन ऐं हुते कम कन, बट अगर तहां जे माइंड में on the top of your head आहिनि त? Yeah, sure. Iram, आजकल जेके भी banks in Pakistan जो almost जेके भी वॾा banks हैं, they all have different cyber security departments in सभिनी वटि आहिनि almost. कंहिं बि बैंक खे join करे था सघनि उन्हनि जे security setup खे as intern. ऐं उन खां अलावा जेके असां मोबाइल या communication companies आहिनि, हुननि सभिनी वटि setups आहिनि security जा. And different government organizations हैं जेके भी कन था internship कराइन था, for example FIA जा आहिनि, ISI जा setups आहिनि. Obviously उते पहुचण थोरो ॾुखियो आहे, but you can actually start doing that. मां जॾहिं masters बि कयां NUST मां, actually we used to go to FIA and सिर्फ इहो न आहे त मूंखे इन करे entertain कयनि जो I was from military. No, बाकी भी जेके मां सां गॾु सिविल जा स्टूडेंट्स हुया, we all actually used to go to FIA and ISI as well. ऐं हुननि जे हुननि setups में वेही कम बि कयोसीं, ॾिठोसीं बि त how is it all, operating. Okay, Adi, Dr. Arfa, अगर तहां please पंहिंजे पाण खे unmute कयो. I would just introduce Dr. Arfa. She's a PhD and in IT, and she's working in the IT departments in university. So please, Dr. Arfa, if you could unmute yourself. Yes, please go ahead. Yeah, thank you very much, Sana team, especially you already introduced myself. My name is Dr. Arfa Bhutto. I am assistant professor at Institute of Information Technology and currently running a technology incubation center at University of St. Jamshoro. Actually, मुझे suggestion करना है. I really taking interest given Dr. Fawzia Idris says she is also running one of the incubation center and giving an idea about the security and all these stuffs. कि तव्हां पंहिंजा startups idea करो. It is related हिकिड़ो मुझे mind में भी question हो. A few days ago, one of my student, he asked me, okay, Madam, can you guide me? Okay, I want to run my own startup in a security and like in your field especially, because my field is software engineering, purely formal methods. So I was unaware about it. So I say, I don't know exactly, I should contact with some concerned people, okay, what to do in this field and how it can be. So it's really interesting that Dr. Fawzia यो हिकिड़ो सुठे तरीक़े सां ॿुधायो त इहा बि हिकिड़ो स्टार्टअप आइडियाज़ आहिनि जंहिंमें ॿार पंहिंजो पढ़नि, मतिलबु काफ़ी अॼुकल्ह ॿार आहिनि इंट्रेस्टेड हिन तरफ़. They came to me and discussing about these things, how they can be work in the security, because he is also curious कि मैं कैसे काम करूं और मुझे जो है मतलब किस हद तक मैं जा सकता हूँ. तो मैंने कहा I am not a concerned person, but luckily today I found that Dr. Fawzia, she is very concerned person in this related. So can you advise me that I can guide him and then send me your email or the phone number so we can talk and chat, and he's really good student, so I want to help him.
So Yeah, in future also, because you are in Karachi and I am in a Jamshoro, so we can meet and then having a somehow future plans on the startup journey and all these things are mutually, and even the deliver one seminar on the your security and all these stuffs are especially your related field. So this was the actually my just only concern, and मुझे मतलब ये होता था वहाँ का help वठूं असी भी सेंट यूनिवर्सिटी जामशोर में ऑलरेडी सना काफ़ी हेल्प कर दिया स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट सेंटर में एंड सर गुलाम कादर मल्ला जे थ्रू इट्स रियली गुड प्लेटफॉर्म कि वेयर मीट विद द सच पीपल all around the world and professional people. So Dr. Fozia, can you help me in this regard? Thank you. yeah, why not? Why not, Arifa, Dr. Arifa? Actually, security side ते इलाही घणो startup करे था सघन and दाऊद में actually मुंहिंजी त कोशिश हुई त mostly हिन साइड ते हुजनि because cyber security सिंध में न हुअण जे बराबर आहे तो मां इलाही कोशिश कई अञा ताईं कयां पई त वधि में साइबर सिक्योरिटी खे थोरो अपलिफ्ट कयूं सिंध में because world is going towards that and असां सिंध में बिल्कुलु हिन फील्ड में पुठियां आहियूं. There's no BS program in cybersecurity. That's why I just launched in Dawood University. Coming towards startups and cybersecurity, it's a vast field. हिनमें एतिरो कम थियण वारो आहे स्पेशली आई वुड से लाइक सर्विलेंस साइट ते हलिया वञनि सर्विलेंस साइट ते हो स्टार्टअप करे था सघनि ड्रोन साइट ते करे था सघनि ड्रोन सिक्योरिटी ब्लॉकचेन इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स के ॿाहिरि त हाणे न्यू न आहे रही बट पाकिस्तान जे केस में स्टिल इट्स अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऐं मोस्टली असांजी बैंकिंग ऐं जेके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आहिनि उन्हनि खे सिक्योर करण जे लाइ दे आर यूज़िंग ब्लॉकचेन even energy sectors, different sectors, blockchain ke use thakan. I would suggest the hona site te bilkul kan and I am happy to help. Means ke kedi bhi kisam ji, but maaj hinan sa Ena and Iram sa already just share kare chuki aya. Actually next week I am moving to UK. So it's not maybe it may not be possible the ma hitan Dawood and करे सघूं collaboration. It was possible, but no more, I would say, because now I'm just leaving Dawood and going to UK. Oh, so sad. Chali, we are late. But it's still obviously means it's not, this world is so digitized, everything is online. Why can't we collaborate online? Means ke jate banya pima UK, we can collaborate and I can guide it. Yeah, that's the good thing. Yeah, of course. And sure, in future we will collaborate and do some actually Right. intensive seminars. Sure, why not? Iram, क्या questions आहिनि या सर आप कहीं? Facebook ते ना फिलहाल कोई questions ना आहिनि. I'm sure कि जॾहिं session ख़त्म थींदो त पोइ काफ़ी हूंदा. Okay, so अच्छी बहन, sorry. Mansoor Qureshi Saab is asking, what are some basic steps? I think it's the same thing, redundant. What are some basic steps if someone wants to get into cybersecurity career? We have already addressed that. Okay, and Nargis Abros Saiba, your message, you're doing a really great job. Your efforts to enlighten the role of women in modern world of technology. So thank you very much. Adiana, do you Thank you, Nargis. Adiana, तहां जे दिमाग में कोई क्वेश्चन आहे या असांजे मैम जो बि असांजा हींअर पार्टिसिपेंट्स आहिनि तहां प्लीज पंहिंजो हैंड रेज़ कयो त तहांखे अनम्यूट कयूं असां. Otherwise, over to you, Adiana. Sure. मुझे दिमाग में I think the same question जॾहिं असां मां business intelligence जो बि session कयो हुयो तॾहिं बि इहे questions हुया ऐं हाणे फौजिया खां बि इहे common questions and how to really get into that field. I think सुठो idea रहंदो कि असां offline collaborate कयूं ऐं कोई resource page वग़ैरह ठाहियूं अहिड़ा जाते जेके बि असां mentoring sessions कयूं था उन्हनि
सां related का information share कयूं पंहिंजे participants सां के kind of a quick cheat sheet if we may. I think just to idea रहंदो. I have no issues sharing my personal information, and I'm sure Fozia LinkedIn te ahe, asa sab LinkedIn te आहियूं, asa पंहिंजे माण्हुनि खे being us coming from Sindhi background, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कि जॾहिं असां Fozia जहिड़ा role models ॾिसंदा आहियूं around us, जेके very limited आहिनि ऐं असां अहिड़ा वधीक ॾिसणु चाहियूं था. त क्वेश्चन त कोन्हे पर कॉमेंट आहे ऑडियंस जे लाइ कि जीअं Fozia चयो, be in charge, like create your own jobs, find the companies, learn on your own with hard work and patience. Nobody is stopping you. केर तो तव्हांखे रोके सघे. ऐं जॾहिं तव्हां ॻोल्हींदा अथव ऐं असांजे ज़माने में त गूगल कोन हुयो. मूंखे कॾहिं कॾहिं मुंहिंजा ॿार पुछंदा आहिनि मम्मा गूगल खां सवाइ पढ़ियो कीअं, मतिलबु उन्हनि जी परसेप्शन में कोन ईंदो आहे, हैरान थींदा आहिनि. असां अगरि गूगल खां सवाइ पढ़ी वियासीं त अॼुकल्ह जे ॿारनि जे लाइ त तमामु घणियूं अपॉर्चुनिटीज़ ऐं रिसोर्सिस आहिनि जेके उहे सर्च करे सघनि था. ऐं यूनिवर्सिटीज़ ॾाढो सुठो लॻो आरफा खां ॿुधी कि सिंध यूनिवर्सिटी बि इंक्यूबेटर प्रोग्राम शुरू कयो आहे. त अहिड़े क़िस्म जूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि कोलैबोरेशन जे लाइ. ऐं असां Fozia जहिड़नि माण्हुनि खे इंस्पायर थियूं, लर्न कयूं. I think that is the best thing I can say. Thank you, Adiana. जीअं मां शुरू में चयो त असांजो जो प्लान आहे, जो असांजो विजन हुयो टू स्टार्ट दिस मेंटरशिप सीरीज़, उहो ईअं ई हो, जो बिल्कुलु इहो हो त असां जो गैप आहे, ब्रिजिंग द गैप, उहो कयूं. ऐं असां कोशिशि कयूं त असां पंहिंजी स्पेशली असांजी छोकिरियूं ऐं असांजी यंग जनरेशन बैक होम उन्हनि खे उहे वेब अपॉर्चुनिटीज़ जे बारे में ख़बर पए, उन्हनि खे ॿुधायूं. त जीअं अदी Fozia चयो कि हाणे ही ज़मानो इहो पाकिस्तान में अञा ताईं बि इहो ई माइंड सेट आहे त असांखे गवर्नमेंट जी जॉब मिले. इट्स बियॉन्ड दैट. ऐं ॿियो इहो त असां वटि इलाही अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि. ऐं सना वुमेन काउंसिल इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि असांजा जो सिंध में असांजा आहिनि, असांजा छोकिरा छोकिरियूं जो यंगस्टर्स आहिनि, उन्हनि खे हिननि अपॉर्चुनिटीज़ जे बारे में ख़बर पए ऐं असां हुननि खे लिंक करायूं अहिड़नि माण्हुनि सां जीअं डॉक्टर अदी एना आहे जंहिं बिज़नेस इंटेलिजेंस ते कयो, या जीअं अदी Fozia आहे जीअं हींअर साइबर सिक्योरिटी जे बारे में ॿुधायो. देयर आर सो मेनी वेन्यूज़. ऐं इहे मां तव्हां सभिनीनि खे इहो ॿुधाईंदी हलां कि इहो सेशन अॼु फेसबुक ते लाइव हुयो. त इरम कलबानी मुंहिंजो नालो आहे, त मुंहिंजे फेसबुक ते लाइव हुयो. यू कैन लीव द क्वेश्चन्स देयर एंड इट वाज देन shared on a lot of other Facebook groups as well. तव्हांखे अगरि हींअर क्वेश्चन्स न आहिनि, if you have any other questions, if you want to get connected to Dr. Fozia or Adi Ana Khan, you can leave a message there. They both are on LinkedIn. You can get in touch with them as well. And thank you very much, Adi Ana. Thank you so very much. Adi Fozia, I have no words to say thank you. You are indeed an inspirational woman. You are the kind of person that I would actually meet again and again to get inspired. Thank you very much for sparing time. She's moving to UK, I guess next week, to do her another feather in the cap. But हुननि इहो ई चयो कि इरम ऐं एना मां तव्हां सां कमिटमेंट कई, हिन करे मां I will go ahead and do this session. So thank you so very much, Dr. Fozia and Adi Ana Khan. Thank you, Iram. Fozia, Thank ॾाढो you सुठो so लॻो much. तव्हां सां मिली. मूंखे पाण really, and it मुंहिंजे पहिरियों actually session हुयो in Sindhi, and I'm so excited and I'm so happy. I thought कि मां शायद सिंधी में न करे सघंदसि because cyber security मां कीअं explain कंदमि सिंधी में. I was thinking, and even in afternoon त मां कीअं explain कंदमि cyber security कि मां कॾहिं कई न, but it was easy. And I'm happy. I don't know सम्झ में आयो या न, but I think केतिरो मां करे सघियसि सिंधी में. तमामु सुठो explain कयो Thank you. तव्हां Fozia. So just a message, proud of Mute alumni, Adi Rakshanda Chaiwa. So they are all proud. Rakshanda, yeah, I know Rakshanda. Wow. So Rakshanda, I think she is in USA. Again, I think so. your program khatam karan kha पहिरियों, your session wrap up karan kha पहिरियों, मां तव्हां सभिनीनि खे especially असांजे उहे youngsters जो सिंध में हींअर आहिनि जो असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, the Adi Ana bhi Sindhyani aahe and is doing an amazing job in business intelligence. Dr. Fozia is a beacon of hope,
सिंधियाणी आहे, सुजावल मां आहे। मां हैदराबाद में आया, currently working as a physician in British Columbia। जॾहिं असां इहो सभु कुझु करे सघूं था मेहनत सां, कमिटमेंट सां, there is no reason त कोई ॿियो नथो करे सघे पियो। Yeah, always सेशन ख़त्म करण खां पहिरियां हिकिड़ी शइ ऐड कंदसि। मां रिसेंटली हिकिड़ो प्रोजेक्ट कयां थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ऐं हिकिड़ी यूनिवर्सिटी सां कोलैबोरेशन आहे, एडमिंटन बेस्ड यूनिवर्सिटी आहे, कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, ऐं हुननि जो साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स जो प्रोग्राम आहे। त जॾहिं मां हुननि जे प्रोफेसर सां ॻाल्हायां पई, मां जेनेरिक क्वेश्चन पुछो, तव्हांजा मोस्टली स्टूडेंट्स किथां जा आहिनि? त हुननि चयो इंडिया एंड अफ्रीका। ऐं मां हुनखां पुछियो तव्हां वटि कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट कोन्हनि या असांजे मुल्क में? चवणु लॻा न। I think one of the links I would post that they are offering a very good program in Canada if anyone is interested to join that master's program and come here. तहां अदी एना प्लीज फेसबुक ते हिन जो लिंक्स जरूर हाँ, मां डेफिनेटली लिंक असां पंहिंजे तमाम ऑडियंस के एज अ यंगस्टर्स के यो एनकरेज कंदासीं बिफोर के डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू वंस अगेन अदी फौजिया, थैंक यू अदी एना। Thank you so much, and it was really nice. It was nice to be with all of you. Thank you. Thank you so very much. Allah Hafiz. ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.